Nearly 16,000 sanitation workers of the East Delhi Municipal Corporation as well as North Delhi Municipal Corporation are on strike. Delhi government had been kind enough to prepone the last installment of the grant, 119 crore, which was provided to MCD, East MCD, and we immediately released their salaries to the sanitation staff. कल आप लोगों में से कुछ लोग मनीष सिसोदिया जी को मिले थे, उन लोगों ने कुछ पैसे आप लोगों को रिलीज करे, 119 करोड़ आप लोगों को रिलीज करे आपकी सैलरीज के लिए। आज आपकी क्या डिमांड है? मैडम हमारे साथ धोखा करा, हमें कुछ नहीं दिया उन्होंने, हमें कुछ नहीं दिया, हमारे साथ धोखा करा, हमारे साथ विश्वासघात करा है, विश्वास मेरी माता बहनों के साथ करा है, विश्वास हमारे बच्चों के साथ करा है, हमारे साथ सरकार दुहात कर रही है। सैलरी को 3 महीने हो गए जी। हमारे कर्मचारी की डिमांड है हमें कैशलेस कार्ड दिया जाए और जो 10 लाख रुपए हमारा एरियल बनना है हमें एरियल दिया जाए। हमें पक्का करा है, 20-20 साल हो गए हम काम करते करते और हमें पक्का नहीं कर रहे, तनख्वाह भी नहीं देते हमारी। हम गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों का पूरा करें? हमारे टीचरों का पैसा मिल जाता है, नर्सों का पैसा मिल जाता है, हम मेहनत करते हैं, हमारा पैसा क्यों नहीं मिलता? अभी तो हम कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी हो या आम आदमी हो, इन तीनों पार्टियों ने हमसे हमारे साथ विश्वासघात किया है। पूरी दिल्ली में चक्का जाम करेंगे, सीवर बंद करेंगे, हड़ताल जारी रखेंगे जब तक हमारा लाभांश नहीं मिलेगा। ये 10-15 दिन से बहुत कूड़ा हो रहा है यहाँ का, कम से कम परेशान है सब लोग, गाड़ी निकलने में आने जाने में बहुत तकलीफ है सबसे ज़्यादा। ये कूड़े की वजह से जाम भी लगता है, यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है किसी को, बदबू बहुत ज़्यादा मारता है। गेट के आगे भी कूड़ा है, घर के बाहर भी कूड़ा है, हमें अब खुद को दिक्कत हो रही है, कूड़ा किसी घर पे जाके डाल के आए। अब हमें तो कुछ समझ नहीं है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हाँ, इस तरह अगर गंदगी फैला रहेगा तो इंसान बीमार हो जाएगा, बीमारी के तो पूरा 100% चांस रहते हैं और इस तरह तो ठीक नहीं है ये चीज़। And that's our national capital, ladies and gentlemen, piling up with garbage that's rotting on the streets right now, while the various governments in charge of Delhi play a game of blame as they pinpoint each other as the reason why Delhi is piling up with garbage. In the meantime, 1.4 lakh Safai Karmacharis and employees of the various municipal corporations of Delhi threatening to go on strike. The engineers, the teachers are also threatening to join that strike. That's the situation on the street right now. There are several Karmacharis who've agreed to call off their strike, but other groups are still on strike. The question that we're asking is, if we set aside all of the extremely complicated politics that's happening in Delhi right now, why can't those in charge of the city simply do their job? Why do the citizens of Delhi have to put up with this mess on their streets? And why should our national capital look like it does today? Joining me on the show this evening, Shobha Vijender. She's an MCD corporator with the BJP. We also have Prerna Singh of the Congress, who joins us on the phone line for the time being. Kamal Mitra Shenoy is a professor of the Center of Comparative Politics and Political Theory at JNU. We'll also have Debbie Goenka of the Conservation Action Trust joining us in the studio, and Raju Kohli is the president of the Akhil Bharatiya Safai Mazdoor Sangh in Delhi. Raju Kohli ji, I will start with you. आप बताइए, ये स्ट्राइक किस बात के बारे में हुई थी? जी मैम, ये स्ट्राइक हुआ था कि पूर्वी दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं हो पाई और टोटल कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम के हैं, पूर्वी दिल्ली के टीचर्स हैं, नर्सें हैं और गार्डन के कर्मचारी हैं, उन सबको सैलरी नहीं मिली भाई। लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? दिल्ली सरकार टाइम टू टाइम ने उन्होंने बजट दिया, लेकिन हेलो, हाँ बोलिए। दिल्ली सरकार ने पिछली बार भी इनको बजट दिया था, 602 करोड़ समथिंग रुपया दे चुके हैं। अब भी 119 करोड़ रुपया रिलीज किया सैलरी का। दिल्ली के अंदर तीनों मेयर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। क्या इन लोगों को नहीं दिखता कि दिल्ली का सफाई कर्मचारी भूखा मर रहा है, उनको हम सैलरी नहीं दे पा रहे? दिल्ली के मेयर, तीनों मेयरों ने कभी भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने की गुजारिश नहीं करी। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि हम कर्मचारी दिल्ली सरकार के नहीं, हम दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं और दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है। ठीक, शोभा विजेंद्र, सेम क्वेश्चन आपको। आपने सुना अभी कि राजू कोहली ने क्या बोला?
इसका जवाब दे दीजिए, पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारी को अपनी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल राजू जी को मैं बताना चाहूँगी कि हम उनके बिल्कुल साथ हैं, और चाहे सफाई कर्मचारी हो, नर्सेज हो, इंजीनियर्स हो, टीचर्स हो, सबको समय पे सैलरी मिलनी चाहिए, और नहीं मिलती है तो इसके लिए सच में हृदय से हमको बहुत दुख है। लेकिन मैं इसको आई रियली वांट टू शेयर सम ऑफ द फैक्ट्स, बिकॉज this is for the third time there is a strike and the money is being released, but this is ultimately again not the solution. Our government is all the time politicizing it, and again 119 crore is not the money needed for it. Actually they have not implemented the 4th finance commission. If they do that, does this, immediately we can have 3,000 crores rupees, and if we have this 3,000 crores rupees we can do everything. But what Delhi government is planning, they only want to politicizing the issue. The chief minister himself is busy in Punjab. He has nothing to do with the people of Delhi. That's what I want to say. शोभा विजेंद्र जी, मनीष सिसोदिया ने आज ट्विटर पे एक लिस्ट डाला कि दे हैव रिलीज्ड द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव गिवन to the MCDs, to the municipal corporations of Delhi. It says between 2015 and 16, 702 crore rupees were released. Between 16 and 17, 605 crore rupees were released. If this money was released, why was it not used to pay salaries? No, it is being paid to give salaries. आप मनीष सिसोदिया की बात कर रही हैं, मैं सीएम केजरीवाल की बात कर रही हूँ। उन्होंने भी ट्वीट किया है आज, और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सैलरी के पैसे निगम पार्षद खा जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, उनके पास कुछ है ऐसा सबूत, कोई एविडेंस है उनके पास जिसकी बुनियाद पे वो ये सब कह रहे हैं? उनका कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव आता है जो हमको बताता है कि कुछ भी बात बोल दे, आपके मुंह के अंदर कोई लगाम नहीं है? आप भी इलेक्टेड पर्सन है, हम भी इलेक्टेड पर्सन है, किसी के लिए भी कुछ भी कह देना। आई जस्ट वॉन्ट टू से, अभी नाउ यू हैव सेड कि ही हैज रिलीज समथिंग कि इतना इतना हमने पे किया। आई एग्री टू दिस, बट व्हेन आई एम सेइंग आवर नीड्स आर सो मच because we have to pay not only the safai karmchari, nurses, engineers, lakhs of employees are there. Actually what they have to do, they have to balance this through the Delhi Finance Commission recommendation. They are not doing that. Okay, I want to bring in Raju Kohli. Chief Minister Arvind Kejriwal ने कहा है कि काउंसलर्स जो है वो फंड्स को साइफन कर रहे हैं, और शोभा विजेंद्र जी ने का कहना है अभी कि आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं, आप कैसे बोल सकते हो? आप बताइए, आपके ख्याल में पैसे कहाँ जा रहे हैं दिल्ली? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी पिछली दिवाली पे मिस्टर मेयर थे मिस्टर रविंद्र गुप्ता जी, उनके टाइम में नवंबर में एक ऑर्डर पास हुआ कि जो कर्मचारी हैं नॉर्थ दिल्ली के, हेलो बोलिए राजू जी, हेलो, नॉर्थ दिल्ली कर्मचारियों के लिए एक ऑर्डर पास हुआ कि इनको 40,000 की किस्त दिवाली पे दी जाए। उसके लिए कमिश्नर साहब ने 35 करोड़ रुपया रिजर्व किया। हाँ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था, हमारी दिवाली काली मनी, और हमें वो 40,000 की किस्त नहीं मिली। हमें ये पता लगा कि भाई इस 35 करोड़ रुपए को डिवाइड कर दिया गया, ठेकेदारों की पेमेंट करा दी गई, और जो विडो पेंशन जो बांटते हैं निगम पार्षद, ये उनको दे दिया गया है। वो 40,000 की किस्त आज तक नहीं मिली, 1 साल से ऊपर हो गया है। बताओ ये पैसा ऐसे डाइवर्ट होता है? ये प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, ये ऑर्डर बाकायदे निकला था। ये प्रूफ, मैडम शोभा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप काउंसलर हैं, अपने आप ही सच्चाई, ये आपका नॉर्थ दिल्ली का मामला है। आपने अपनी बातें सच्चाई में बोल दी, आपने अपने बहुत ही अच्छी बात बोल दी, सच्चाई बोल दी आपने बोल दिया कि जो भी पैसा था उसको पेंशन जो था वो एक सोशल वेलफेयर का कॉज है, तो उसमें किसी निगम पार्षद से कोई मतलब नहीं है। ईसीएस के माध्यम से वो पैसा पेंशन के लिए जाता है। किस बिना पर सीएम ने ऐसी झूठी स्टेटमेंट दे दी? मैं तो चाहती हूँ कि हाई कोर्ट पेंशन तो आप निगम पार्षद जो पेंशन कोई निगम पार्षद कोटे से जो पेंशन दी जाती है, ये बात कह सकता है निगम पार्षद पैसे से कोटे जाती है क्या? कोई सीएम कह सकता है क्या? सुनिए, जो पेंशन आप बांटते हैं अपने कोटे से, जो पेंशन बांटते हैं वो वहां डिवाइड किया गया। जो ठेकेदार की पेमेंट का तो बताइए।
जो ठेकेदार की पेमेंट काम के लिए हुई होगी, अगर उसके अंदर कोई कमी है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो हमें गुमराह क्यों किया जाता है? हमें झूठा ऑर्डर क्यों दिया जाता है? सारे लोगों को देखिए, सबसे ज्यादा हम आपके साथ। ये ऑर्डर जो निकला कमिश्नर साहब का 40,000 की किस्त देने का ऑर्डर निकला, उनके साथ हैं। मैम शोभा जी सुनिए, हम भी बीवी, अगर हमारे साथ अगर लोग हो, पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे साथ हो, तो आज दिल्ली के अंदर हमारी दुर्दशा ना हो। एक मिनट आप पार्टी ने केवल और केवल एमसीडी के साथ एक ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार वो कर रहे हैं, और उनको जो 4th दिल्ली फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो देना है वो उन्हें देना चाहिए ना। आप उनसे जाके एक बार आप पार्टी से कहिए कि आप पार्टी को जो शेयर देना है सोशल वेलफेयर कमीशन का मामला, ये आप करिए, आप दिल्ली के सफाई कर्मचारियों पॉलिटिकल झगड़े के अंदर दोनों आप कर्मचारियों को क्यों अत्याचार कर रहे हैं? जैसे हम कोई बैगिंग कर रहे हैं। Shobha Videndra, 1 second. Professor Chinoy, this is unfortunately the reality every time we have a discussion about Delhi. There are multiple parties, multiple governments, multiple authorities in charge of Delhi, and it is the worker and the citizen who suffers because the buck is just being passed from one side to another. Who is responsible for Delhi? Is it the central government? Is it the state government? Is it the MCDs that are run by the BJP? Who's responsible for what's happening in Delhi today? Well, as we can hear, no one seems to be responsible. They all hold the other responsible. But there is one ray of light. On the 14th of December, the Supreme Court said that an elected government in Delhi must be treated like an elected government. And this is going to be finalized, their decision, on the 18th of January. Maybe this will help restore some order, that the Delhi government will have to take more responsibility for issues that are dispersed amongst a variety of local authorities. But I think the major fault is that money gets released at the last moment. And then there is a obvious anger by people that our salary was due on this date and it has not come yet, and therefore they're driven to a strike. If this was the first time, they might not have gone on a strike, but there have been repeated problems like this. So I think there must be, after the Supreme Court verdict also, there must be a meeting of all the Delhi authorities, and they must mark out their area of responsibility. This is simply ridiculous, that the workers have no choice but to go on strike. But part of their problem is they don't know who is responsible for what. And that is not how the capital of India should be run. That's very well said. In the meantime, of course, garbage piling up on the streets. I want to make a very small remark. I want to make a very small remark. Yes, go ahead. What I want to say is there is a 3-tier system. If MCD has to face any problem, then State Finance Commission is there to look after that. If a state is facing some problem, then Central Finance Commission has to look after that. But here is the problem, that our people, they don't want to work, they want to only create the ruckus. Why they pay after the strike? It is their duty to pay beforehand. That is why Safai Karamcharis are suffering. That is why nurses are suffering. It is their duty that they have to pay beforehand. They have to implement the 4th Finance, Commission. The buck stops there only, on the shoulders of AAP. Well, let me point out that in spite of repeated phone calls, the representatives of the Aam Aadmi Party have again refused to be part of this conversation. They are busy. Now Manish Sisodia is saying that that Arvind Kejriwal is going to be the CM of Punjab. Well, they are so careless. Let me bring in Prerna Singh as well. Prerna Singh, the government of Delhi was run by the Congress for a very long time. Now, in that time, it was the MCDs functioned with the government and with the central government. What is going on now? What is happening that is causing this entire system to fall apart and is causing this much trouble to the citizens of Delhi? Congress has run Delhi for the last 15 years and the centre for almost 10 years, and never ever we have seen any such incident happening. Last 2.5 years, ever since Aam Aadmi Party has come into power and has been running Delhi, the strikes of Safai Karamcharis has been normal routine. And
I would say that Aam Aadmi Party is responsible because they are not releasing enough funds and they are politicizing the entire issue. However, BJP cannot just, shirk the responsibility by passing on the buck. They knew that Aam Aadmi Party's approach towards MCD is not correct. Why did they not work towards making MCD a self-sufficient body? Why did they not work towards making MCD a financial independent body? They have been in power in MCD for last 10 years. Why did they not work towards generating their own revenues and not approach state government as a crybaby with a begging bowl? They should have worked towards this, and they should have worked towards generating more and more revenues. The priority of MCD should be they should be able to pay to their Safai Karamcharis on time, and that has not been happening. And wherever and where the revenues are going, where the income of MCD is going, where is the account of it? Well, I want to bring back Professor Shenoy at this point. Professor Shenoy, at the end of the day, help us understand. One second, Shobha Vijendra, I'll come back to you. Shobha, I'll come back to you. Professor Shenoy, at the end of the day, help the average citizen here or the average Delhiite, because there are a couple of decisions to be made. For example, the MCDs go into election next year, which means that the citizens of Delhi have a very important choice to make. There are also elections happening in various other states, where people are going to choose who their state government and their chief minister is going to be. Help us understand here right now that while the buck is being passed, it is true, what Prerna Singh is saying is true, that the Congress was running the Delhi government with the BJP in the MCD, and these sort of strikes were not commonplace at that time. What has changed in Delhi? Well, number one, that is a half-truth in the sense, yes, the Congress was running the Union Territory of Delhi, but for a large part of that time, they had a UPA government in the center. Here, there is an adversarial relationship between the Aam Aadmi Party and the Union government, shown by the fact that about 14 MLAs and the chairperson of Delhi Commission of Women have been charged by various offences from the Delhi police to the CBI. So this is not a situation where these various different groups trust each other. I do agree with the lady that the internal mechanism should be such that the MCD and other bodies should be given a certain amount of financial independence. But that also depends on the fact on how much is the centre releasing at what time. The Aam Aadmi Party has no reason to want to be defeated in Delhi in the MCD elections. So obviously there's a hitch somewhere. And I think after the decision is taken on what powers the Union Territory have, the Supreme Court said these are elected governments, they cannot be treated as the way Delhi has been treated. I think then there should be a meeting of all the political organizations to sort it out. Though I must say, I'm quite amused in a sense, though in this tragic situation, to hear politicians saying others should not politicize the decisions. But isn't that what politicians do? They politicize decisions. But they have different politics and therefore they blame the other. But I think there should be, once the Supreme Court lays down its order, there must be a meeting of all these bodies. It would be good if the union government also intervenes so that the demarcation of functions and the time limits of giving salaries are sorted out. Suppose the union government gives salary X at the right time. Aam Aadmi Party also gives it at the right time. But then the other bodies don't get it in the right time. So as far as the Karamchari is concerned, he is suffering. He will go on strike. Or suppose the central government gives it and the others are slow. What happens is that for the man who's working on the street, he doesn't know who exactly is responsible, especially when you have a plethora of divisions and a plethora of bodies. So that is what is making the thing worse. But I can't imagine any party in Delhi bungling this on purpose because they will pay a heavy political price. Shobha Vijendra, respond to that one statement made by Professor Shenoy. You were the one who said that the Aam Aadmi Party is politicizing the issue.
But effectively, what all parties are doing at this point is politicizing the issue. And Shobha, I want you to just appreciate the footage that's running on our screen of garbage being piled up on the streets of Delhi. And fundamentally, everybody is answerable to the citizen of Delhi. This is what citizens are having to deal with today. This is going to cause a health crisis. Children are going to have to walk through this to get to their school buses. Now, there should be an accountability to the citizen. Isn't it top priority right now for any MCD to make sure that the streets are cleaned up one way or the other and not turn it into a political slugfest? No, definitely. This is not the time to do the politics. You are 100% correct. But I want to make one point very clear to you and to the viewers also, that there is a system. Because ours is a democracy, federal system is there, and we have the three-tier system. Again, I am saying, if we have to face any financial crunch, then we have to go to the state government. And if state government has any problem, then they have to go to the center. But now the problem is this, that this middle part is not playing its role. They are simply doing the politics. This is the fact. Why do they release a big amount of the money after the strike? Why don't they give before? Why they want that children should suffer? Why they want that our senior citizens should suffer? There is garbage all around. Why do they do like this? This is my question. This is 100 million question. The situation is 100% correct. Actually, they don't believe in any system. They themselves say they are the anarchists. They don't believe in any system. So they want to surpass. They all the time say you go to the central government. Why we should go to the central government? It is our constitutional right to ask with the state government. They have to help us. But they don't. And as far as self-sufficiency is concerned, and MCD does lot of welfare programs, health, education, where they don't get anything. Shobha ji, 1 minute. Prerna wants to respond to you. Prerna Singh of the Congress Party, go ahead. Shobha ji, I want to ask you, Mr. Narendra Modi, who is known for tough decisions and who is known for taking quick actions as per the Bharatiya Janata Party, he is the same Prime Minister who took just few hours to announce that 85% of the currency of this country will not be valid in next 4 hours. Why just he can't intervene and make sure that the Safai Karamcharis are paid? Why you have to cry for the system? Why you have to give us explanation? Just make sure that the Safai Karamcharis are paid, and we can work on the processes and the systems later on. Can we not do it? You have spent thousands of crores on the Swachh Bharat Abhiyan ad campaign. Why can't your Prime Minister just intervene and make sure the Safai Karamcharis are being paid? Is it that difficult? All right, Prerna Singh, I just want to point out one thing. Prerna Singh, let me just point out one thing. Mr. Narendra Modi is our Prime Minister. He's everyone's Prime Minister. He's not just Shobha Vijendra's Prime Minister. Having first set that aside, Shobha Vijendra... He is the Prime Minister of 125 crore people of India. Prime Minister of India. He is the Prime Minister of India. Okay, Shobha Vijendra, answer that question though. Shobha, the question was valid. Prime Minister of 125 crore people of India. Shobha Vijendra, the question was valid. Has the Swachh Bharat Abhiyan released any funds to the Delhi MCDs? Our Prime Minister, I'm telling you. Of this India, and our Prime Minister of India. Ladies. Are not part of this country? Okay, one second. Let me just ask that question again. Ladies, 1 second, please. They are very much part of India. Okay, 1 second. Shobha Vijendra, has the Swachh Bharat Abhiyan released any money to the Delhi municipal corporations? My dear, I am always saying this, and I will say again and again that our Prime Minister and our BJP government believes in system. We do everything in system, and in this system, it is the provision that first of all, if and you will keep following. What are you talking about? What are you talking about?
What are you talking about? अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी सुनिए, अगर हमारे अरविंद केजरीवाल जी खांसते भी हैं तो कहते हैं उनको फांसी प्राइम मिनिस्टर ने कराई है, उनको प्राइम मिनिस्टर ने कराई है। आप बताइए, there are All right, one second, ladies, one second. I'm going to ask you both to stop. I want to bring in Debbie Goenka here and Raju Kohli. One second. I also want to point out to our audience, Shobha Vijendra, one second, madam. One second. State government only. 1 second. Let me point out that the Swachh Bharat Abhiyan, one second, madam. There are thousands and thousands of local I agree with your system. Where they have to deal with the state government only. Okay, I agree with your system. They have to deal with the state government. You're not letting me speak. Shobha Vijendra, your point is taken. 1 second. How are you going to deal with it? 1 second. Debbie Goenka joins us right now. Debbie is an environmentalist. Debbie, I want to ask you about the Swachh Bharat Abhiyan. I know that there is a rural fund and there is a city-based fund which is meant to be released to municipal corporations. In that case, the problem that we are facing in Delhi today of garbage piling up on the streets, and if there isn't enough funds to be released to the sanitation workers or to the Safai Karmachari, shouldn't that money also come from the Swachh Bharat Abhiyan? Debbie Goenka. It seems to me quite obvious that it's a political angle at play here, and one government is trying to make sure that the other government is portrayed as incompetent and so on, and the Delhi citizens are being caught in the crossfire. I don't think money is really an issue because there are contingency funds available at every level, and if emergency funds are required for emergencies, it can be used for garbage clearance as well. And I think really the initiative has to come from the political leadership. I think it's high time that the citizens of Delhi are being held to ransom. And I think the Prime Minister should intervene because he inaugurated the Swachh Bharat Abhiyan. It's something that needs to be done not only for India but now particularly for Delhi. It's quite ironical that the capital is facing the brunt of this kind of problem. And I don't really think money is an issue. I think money is available. People are just making sure that it's not released at the right time to the right people. No, and this is not true. This is not true. If it's not true, how can it possible? If we have the funds, then definitely the government is broke and the government of India is broke. See, if we have fund, then 100%. Is this your idea of a cashless economy that nobody has cash even at the government level, that you can't pay your garbage workers? These two issues are separate. These two issues are totally separate. Please don't mix up them. Our Prime Minister has done what is mixed up is the garbage on the road and the citizens in Delhi are suffering. Okay, so let me just bring in Raju Kohli. These are the 2 points. Raju Kohli. I want some logical statement. Raju Kohli, Shobha Vijendra. We have fund definitely. शोभा विजेंद्र का कहना है, राजू कोहली शोभा विजेंद्र का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है अभी दिल्ली में वो अपनी काम नहीं कर रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है. आप रिस्पॉन्ड कीजिए राजू कोहली. नहीं, उन्होंने वो पैसा नहीं दे रहे ना, टाइम पे पैसा नहीं दे रहे, स्ट्राइक होती है उसके बाद देते हैं. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम. मैम सुनिए, स्टोरी इज रिपीटिंग. स्वच्छ भारत अभियान का पैसा कहाँ है? शोभा जी सुनिए, शोभा जी सुनिए, शोभा जी सुनिए. One second. Let Mr. Kohli finish. शोभा जी सुनिए. स्वच्छ भारत मिशन का जो पैसा है, जहाँ जहाँ एलोकेशन जरूरी होती है वहाँ है. जी. जिसके लिए वो बना है मिशन उसमें है. नहीं, दिल्ली के अंदर जब पिछली हड़ताल की थी, 13 दिन हड़ताल चली, जब भी सैलरी के लिए एरियर के लिए लड़ी. सुनिए मैडम, सुनिए प्रेरणा सिंह जी, आप भी सुनिए. मैडम सुनिए, पिछली साल जब हड़ताल हुई जनवरी के अंदर 13 दिन की, और अब फिर दोबारा हमें हड़ताल पे जाना पड़ा. क्या स्वच्छ भारत अभियान का पैसा दिल्ली में नहीं आया? हमारे कर्मचारी दिल्ली को साफ रखते हैं. हमारा कर्मचारी सुबह 5 बजे. सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए. पहले मैडम मेरी बात सुनिए. शोभा जी मेरी बात सुनिए. आपसे पूछना चाहती हूँ. पूछिए. हमारा कर्मचारी सुबह 5 बजे अपना घर छोड़ देता है. किस लिए? जी बोलिए, आप बोलिए. नहीं, राजू कोहली जी आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर शोभा विजेंद्र जी. शोभा लेट हिम फिनिश हिज क्वेश्चन. हाँ, राजू कोहली जी आप बोल दीजिए. राजू कोहली जी आप बोल दीजिए. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा कर्मचारी सुबह 5 बजे अपना घर छोड़ के दिल्ली राजधानी को साफ करने के लिए निकलता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी
पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूं और उनका सम्मान करता हूं और उसका समर्थन करता हूं स्वच्छ भारत अभियान का। लेकिन अगर हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी, उनका एरियर नहीं मिलेगा, तो क्या स्वच्छ भारत अभियान दिल्ली में सफल हो पाएगा? आप हमारे कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे, बिल्कुल आपके दोष दे रहे हैं दिल्ली सरकार पे। स्वच्छ भारत अभियान का पैसा पता नहीं कहाँ है, दोष तो देंगे ही। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एक मिनट मैडम सुनिए, स्वच्छ भारत अभियान तभी सफल होगा जब हमारा कर्मचारी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी सफाई करता है। लेकिन हमारे कर्मचारी को सैलरी की बात नहीं है, सैलरी के साथ साथ हमारा करोड़ों रुपए का एरियर बकाया है, 6 पे कमीशन का एरियर बकाया है, 7 पे कमीशन का एरियर बकाया है। इस एरियर को कौन देगा बताइए? आप बीजेपी सरकार देगी या आम आदमी पार्टी की सरकार देगी? आप सेंटर में बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारे दिल्ली के तीनों में रहने कभी जाके Is it going to come from the state government, the Aam Aadmi Party that refuses to respond, or is it going to come from the MCDs or the central government? Shobha Vijendra, respond. देखिए, मैं बताना चाहती हूँ इनको, स्वच्छता अभियान तभी होगा जब 125 करोड़ लोगों के घर के बाहर और हर तरफ स्वच्छता होगी, सब हंसी खुशी होंगे, सब जगह स्वच्छता होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि जो काम आपके बच्चे को पढ़ने के लिए करना है, बच्चे को स्कूल जाना है तो बच्चे को स्कूल जाना है, पिता को काम पे जाना है तो पिता को काम पे जाना है। एक बात बहुत सीधी सी है कि जब 4th फाइनेंस कमीशन को हमको 3000 करोड़ रुपीस देने हैं, तो ये जो आप गवर्नमेंट है ये उसको देती क्यों नहीं है? ये क्यों बार बार पहले स्ट्राइक कराती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पैसा जैसे हम बेगर्स है ऐसे देती है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि अगर दिल्ली नगर निगम को कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। जहां तक आपने बात कही कि प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करें, मैं आपको बताना चाहती हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, पंचायती राज है और हर जगह एक सिस्टम है। उस सिस्टम को मजबूत और मेंटेन करने के लिए अगर प्रधानमंत्री दिल्ली देश की राजधानी है, को देखने लगेंगे, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, आपने दे दी जहां पर सीएम झूठ बोलते हैं, जहां के नहीं हमने सरकार नहीं दी है, ये सरकार ये सरकार ऐसा दे दिया, तो ये पॉलिटिकल पार्टी की नीतियां, जो पॉलिटिकल पार्टी की नीति Professor Shenoy here. Professor Shenoy, we seem to be going around in circles. One second. एक मिनट शोभा जी, राजू जी, एक मिनट. I want to bring in Professor Shenoy. Professor Shenoy, we're going around in circles at this point. The truth is, Prerna, I'll come to you. I just want to bring in Professor Shenoy at this point. Professor Shenoy, we're going around in circles. The truth is there is a Swachh Bharat Abhiyan for which we all pay as part of our service tax. Now within that, one second, एक मिनट, शोभा जी, राजू जी, एक मिनट. अगर आप लोग ऐसे बोलते ही जा रहे हैं तो चर्चा नहीं हो पाएगी। शोभा जी, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। I will come to you, Prerna, please. I will come to you. Just give me 1 second. Professor Shenoy, there is a Swachh Bharat Abhiyan for which we all pay taxes. Now, the Swachh Bharat Abhiyan has an urban fund and a rural fund. The urban fund is meant for sanitation, for public toilets, and for solid waste management. Now, there is a fund as of the end of last year, 7,300 crore rupees set aside for solid waste management in capital cities and large urban areas in India. Now, we don't know what is happening to that fund, but there is room here for the fund to be used to at least clean up Delhi. Yes, and I'd like to point out that in Mr. Modi's rhetoric, the real meaning of cleanliness in India has been lost. And that was Gandhi who talked of cleanliness of the soul, of cleanliness of the mind, of cleanliness of how people were taught. When those decisions are accepted and those function, then you can have cleaning up of garbage and all. In what Shobha ji said, she never mentioned toilets, etc. So it's not just a question of garbage. The Swachh Abhiyan is supposed to, and it's now on all the new notes, currency notes, ki ek kadam aur, and Swachh Bharat on Gandhi's spectacles. So the idea must be for when there are these squabbles, the union government must intervene.
It doesn't have to intervene at the governmental level. It can use a secretary or deputy secretary or undersecretary and bring in that Swachh Abhiyan money, and also tell the state government, if you do not have the money, we will give you a loan, and so forth. If the state government doesn't have money, it takes the loan and gives it to MCD. But what is happening now is everyone is passing the buck, and there's a cacophony of noise. And this has been going on for some time. And if the money is not used, it's a waste of that money because you don't get any interest on it. So I think where whatever sums of money are available, the union secretary in charge and the CM and the heads of all the MCD and other organizations should have a meeting with the Lieutenant Governor and sort this out. The problem is that there is a blame game on, and in that people are answering questions asked to them, others are asking other questions, and a lot of time is being wasted. And in the meantime, as Mr. Kohli said, the Karamcharis are not only owed their salary arrears, but they're also owed money from various commissions. So, you know, everything piles up, and because it piles up, people get more excited and go to strikes. So this thing has to be cleansed in the Gandhian sense from the beginning. Unless that is done, this will periodically keep happening. All right. So while we do understand that these are the demands at this point, the Safai Karmacharis have not been paid their salaries for over 3 months. They're demanding salaries be paid, arrears be paid to them. The MCDs, which are the municipal corporations of Delhi, are saying that they have not received the money from the Aam Aadmi Party-led Delhi government in order to pay those salaries. The Aam Aadmi Party-led Delhi government turns around and says that they have released the money has been siphoned off at the councillor level. That's where we are right now. And the truth is, I will repeat this one more time, that the Aam Aadmi Party refuses to be part of these conversations and are hence not represented on this panel. Suman Kumar is on the phone line from Punjab, after which I'll go to Prerna Singh, who has a question for Shobha Vajendra. Suman Kumar, go ahead. Hello. Hello. Boliye ji. Ma'am, I want to make a submission. Yes. Hello. Yes, go ahead. My point is that this PM himself launched the Swachh Bharat Abhiyan, and currently the whole garbage is in front of whole of Delhi. The Council of Ministers and other members of MCD also, and all the higher ups, they also reside in Delhi. So don't they see all these things in the morning in front of the houses? And one more point is this: the whole chain of salary releasing from the government to the lower level, it becomes whose responsibility? Why no one is ready to take the charge? Why it is so? Whose responsibility is this? That's a very good point, Suman Kumar. Vivek is also on the phone line. Vivek, very quickly, go ahead. Yeah, as a Delhiite, I would like to ask a question from Shobha and Prerna, and obviously for us, though they are missing from here. When will they both or all the three party members leave their political stands and then start thinking of the public? It is very, very sad to see where they take a moral high stand of anti-corruption and Swachh Bharat and Congress fighting with them, but nobody is thinking of the garbage and the problem which as a public we are facing. And it is so obvious the system was working previously and suddenly it stopped working. What does it mean? They think that the public is a fool. Next MCD election, you will see the difference when we come out to vote. And these people, the people who are blaming each other, will actually have to eat their own words. Mark my words. So my question to them is, will they take a moral high stand or stop blaming and think about the public? Stop playing politics with the lives of the people of Delhi. Prerna Singh, I will come to you, but we were getting a lot of phone calls echoing what Vivek has said, which is basically the citizens of Delhi want to go on with their lives. They pay their taxes, they want to go on with their lives, they want a healthy neighborhood and surroundings for their children. Why are you playing with the lives and the health of the people of Delhi? Set aside your differences and simply do your job. It's a very, very clear demand, and it's a demand that the people of Delhi are entitled to make. Prerna Singh, what's your question? See, I want to ask Shobha ji that हम सब ये जानते हैं कि 2.5 साल से आम आदमी पार्टी सरकार है और आपका कहना है कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं सैलरीज के लिए, तो आप हमें बस इतना बता दीजिए कि आप
आप दिल्ली की जनता को और सफाई कर्मचारी की कुछ मदद कर पाएंगे या ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी? हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही है, मगर आप दिल्ली की जनता को किस तरीके से इस समस्या का निजात दिलाने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सारा सफाई कर्मचारी को समय पर तनख्वाह मिले और दिल्ली में जगह जगह कूड़ा ना इकट्ठा हो। आप लोग सत्ता में हैं नगर निगम में पिछले 10 सालों से, तो आपके पास इस चीज का क्या समाधान है? या फिर आप हमेशा ही आम आदमी पार्टी को सिर्फ कोसते रहेंगे इस समस्या के लिए, या वाकई इसका कुछ समाधान भी करेंगे? प्लीज इस बात का जवाब दे दीजिए। ऑलराइट, शोभा, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? हाँ, देखिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 5 साल हो गए हैं दोबारा से पार्टी को आए हुए। उससे पहले जब ट्राइफरकेशन शीला जी के समय में हुआ, और शीला जी ने भी प्रॉमिस किया था कि तीनों म्यूनिसिपैलिटी की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी वो हम सॉल्व करेंगे, ना तो उन्होंने पूरा किया। उसके बाद से लगातार म्यूनिसिपैलिटी को सोशल वेलफेयर के सुनिए सोशल वेलफेयर के सुनिए हमारा देखिए सुनिए हमारे फंड का एक मिनट बात सुनिए। देखिए सोल्यूशन हम लोग बिल्कुल साथ हैं, हम लोगों को करना है, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे हैं। और ये देखिए जो ये स्ट्राइक बार बार कराई जाती है, उसके बाद जो पैसा रिलीज किया जाता है, ये सारी दिल्ली को हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार की पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है। आप बताइए, मैं लॉजिकल बात कर रही हूँ, एक चीज के लिए फंड चाहिए, फंड हमें कहाँ से मिलेगा? हम लोग एक ऐसी बॉडी हैं जिनको एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा अपना फंड स्पेंड करना होता है, हमें हेल्थ पे अपना फंड स्पेंड करना होता है। केवल हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्सेस और कुछ चीजें होती हैं। अभी हमें एक जो सीएम ने बात कही, वो कहा कि आप प्रॉपर्टी टैक्स को 4 टाइम्स बढ़ा दीजिए, 5 टाइम्स बढ़ा दीजिए, आप कहीं से भी पैसा लाइए। हम कहीं से भी पैसा लाएं, पर हम उनसे पूछना चाहते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, द मनी विच वी हैव टू हैव, व्हाई सीएम इज नॉट गिविंग दैट मनी? हम तो जनता को ये बताना चाहते हैं, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और हमको इन इश्यूज पे काम करना है, और इसको हम खींचकर यहाँ पर इसी तरह से लाए हैं क्योंकि दिन रात इसके लिए मेहनत होती है। अगर सीएम के पास जाना होता है, सीएम के पास जाते हैं, डिप्टी सीएम के पास जाना होता है, जाते हैं, एलजी के पास अभी हमारे मेयर और लीडर हाउस गए हैं, सारी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन मैं भी जनता को ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारा ये जो मिडिल टायर सिस्टम है विच हैज टोटली फ्लॉप्ड, दे वांट टू रियली क्रिएट द रक्कस, वो चाहते हैं ऐसी सिचुएशन आए Shobha ji, Debbie Goenka has a question for you. Shobha ji, Debbie Goenka has a question for you. After which I'm going to go to Raju Kohli. Debbie Goenka, please allow me to make one point here. Please allow me to make one point. Please allow me to make one very important point here. शोभा जी, आप कह रही है कि आपने सारे मेहनत की है, आपने बहुत कोशिश की है कि इस समस्या का समाधान हो, मगर हो नहीं पाया। तो आप मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में फेल रही है? Okay, this is turning into a political slugfest again. I want to refocus this conversation. Debbie Goenka here doesn't belong to any political party. He has a question for you. After which I'm going back to Professor Chiroi. One second. शोभा जी, एक मिनट. कॉन्स्टिट्यूशन से शोभा जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है। शोभा जी, एक मिनट. शोभा जी, मुझे आपको एक सवाल करना है। Shobha ji, one second. Go ahead, Debbie Goenka, go ahead. Shobha ji, I have to ask you one simple question. Are the corporators getting the salaries, or it is only the municipal karmacharis who are not getting the salaries? Are you getting a salary? No, all the corporators we are not getting any salary for that. For corporators, there is no salary. Not at all. It is completely a social work, and Prerna can tell you better. So it is only the garbage workers who are not being paid. We are not receiving a single penny for that. Raju Kohli. जी मैम, मैं पूछना चाहता हूँ मैडम शोभा जी से, अभी इन्होंने बोला कि हमारे तीनों मेयर माननीय एलजी साहब के पास गए। दिल्ली के अंदर एलजी साहब पूरी पावर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, क्या उनकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं मान सकते? पैसे के लिए दिल्ली की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, सफाई व्यवस्था, अगर बार-बार उसका मेन कारण कौन है? प्रधानमंत्री जी, ये तो फिर वही आप भी केजरीवाल की तरह एलजी साहब दिल्ली के मालिक है, कि अगर दिल्ली सरकार नहीं होगी,
दिल्ली तो भी सरकार तो भी मालिक मोदी जी ने कर एलजी दिया। साहब दिल्ली के मालिक हैं। दिल्ली में होगा, एलजी साहब को तो दिखना चाहिए ना। अगर इसी मानसिकता एलजी साहब को तो से दिखना चाहिए। 22 तरीके से बात होगी तो मैं आंसर क्या करूंगी आपसे? एलजी साहब को तो बताइए, अगर आप एलजी सारा साहब 22 होके चलेंगे, जब आप एलजी साहब के पास गए तो क्या आपको फंड रिलीज नहीं किया गया? पैसा नहीं दिया गया? एलजी साहब दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली एलजी साहब मालिक है। अभी Yes, when it suits them, LG is the boss. देखिए ये सब बातें ना, मैं यहाँ पर ये फैसला करने के लिए आई हूँ कि कौन मालिक है। मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ कि दिल्ली सरकार ने अपना 4th फाइनेंस कमीशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर वो इम्प्लीमेंट करते तो 3000 करोड़। मैं यहाँ पे 2 जेंटलमैन बैठे हुए हैं, मैं उनसे हल्के से रिक्वेस्ट करूंगी कि क्या आप दिल्ली सरकार को Professor Shenoy, unfortunately, okay, hang on, शोभा जी आप बार-बार वही बात करें। Let me just take this. नहीं प्लीज, नहीं मुझे एक डिबेट का नहीं, सुनिए, देखिए मैं पूछना चाहती हूँ ये बात कि जो हमारा ड्यू शेयर है, जो हमारा ड्यू शेयर है, जिससे हम अपने सफाई कर्मचारियों को, अपने नर्सिस को, अपने डॉक्टर्स को, अपने टीचर्स को सैलरी देनी है, जिसमें आप वो हमें क्यों नहीं देते? मैं आई सिंपली वांट टू नो दिस। Unfortunately, Shobha Vijendra, the Aam Aadmi Party is not part of this conversation to answer that question right now. Let me take the question to Professor Shenoy. Professor Shenoy, actually, then debate is not complete. Actually, what Shobha Vijendra is saying is a very valid point. That if there is a pay commission that is due, why doesn't? And I have a bigger question here. If we stay in this impasse, we have to provide education. If we stay in this impasse, Professor Shenoy, and nothing moves, then what happens to Delhi? For that, Shobha Vijendra is not distorting the constitution. I am not distorting. I'm telling you the logical thing. No, Shobha, let him answer. Shobha ji, let him answer. Is not the constitutional head. The chief minister is not the constitutional head of Delhi under Article 239A. You mean to say chief minister has no role to play? This has to be decided again by the Supreme Court later. But the rule is now that the union government nominee, the lieutenant governor, is in charge. That's why the BJP mayor and all have gone there. They haven't gone there to waste time. My dear friend, they have gone to the LG because the LG has the power. My dear friend, I want to know then what is the role of the CM? Why CM? My dear lady, I am a student of the Constitution. Why he is not? You cannot argue the Constitution. Why CM is not implementing the 4th Finance Commission? Madam, you have repeatedly talked of the Constitution. You are misinterpreting the Constitution. I'm simply asking why he is not implementing 4th Finance Commission. You take the suo moto. Somebody should take the suo moto, or the people of Delhi will definitely take the suo moto. We are talking of the sanitation People of Delhi will definitely take the suo moto. That why he is not giving our due share. And the sanitation problem ultimately comes under the lieutenant governor. Actually, Professor Shenoy, and I'll bring this question to Devi Goenka as well. I have a bigger problem here. One second, Shobha Vijendra, 1 second. I have a bigger problem here. Let's assume, like Shobha is saying, the Aam Aadmi Party is refusing to release the money. Shobha tells us the Aam Aadmi Party is refusing to release the money. If this continues in this manner, what happens to the people of Delhi? They are taking so huge salaries. Then what is the role of a state government then? Okay, all right. Shobha, I get your point. Shobha, I get your point. I get your point, ma'am. No. Okay, I get your point. My question is, if this continues in this manner, what happens to the people of Delhi? Yes, I'm answering you. Yes. I'm answering you. If today the Lieutenant Governor says that following sum of money X has to be given to the MCD, no one can stop him. The only one to overrule the LG can be the Union Minister in charge or the President of India. Shobha is not. This is not the way. Shobha is not listening to the voice of the Constitution. Professor Shenoy, I'm going to ask you to repeat what you said because Shobha was talking over you. Shobha, just 1 second. I just want the audience to understand what Professor Shenoy is saying. After which I will come back to you to respond. Just repeat what you said about the fact. Tell us how the power runs in Delhi. Right now, Delhi is facing a problem. Where is the solution? The solution is more funds. Who can most quickly give more funds? Or if funds are not being released in the 3-tier,
have them released is the Lieutenant Governor. If the Lieutenant Governor is the recommended authority under the constitutional article 239AA of Delhi, he is the most powerful figure in Delhi, and he has the support and backing of the central government. So the correct thing to do is to go to the LG, and he's new in Delhi, but he's a very experienced civil servant. So, and before him there was also a civil servant. So the way to get through to it fast is to get to the LG. The reason that this not happened faster was there was a change in LGs, and it took time for Mr. Baijal to come into his seat and understand what was going on. So if you're talking of constitutional authority, that's one way. But I think something from the bottom up should also be done, and the Swachh Bharat Urban Fund should be released to the municipalities so they can give this money to the sanitation workers so that the sanitation work can be done. Debbie Goenka? Yes, I agree with what Professor has said, and I want to add two more things. I think the LG can direct the state government to release the money. If the state government refuses to do so, they can always go to courts. The courts have time to look at cleaning up the cricket mess. I'm sure they'll have time to look at cleaning up the garbage mess. And I think the third thing is every politician who's part of Swachh Bharat Abhiyan should grab hold of a broom and start cleaning the streets of Delhi if they're not able to pay the Safai Karmacharis. All right, so one of the solutions here is that the LG himself instruct the government of Delhi to release the money. Second, the government of Delhi be taken to court to release the money if they haven't done so. And we clean up Delhi ourselves. Raju Kohli, iska kya solution? जी सोल्यूशन का मैम यह है, सैलरी तो रिलीज हो गई है ईडीएमसी की, और मार्च तक का हमें आश्वासन मिला है सीएम साहब के पास से। हम ये चाहते हैं कि दोनों गवर्नमेंट मिलके हमारा जो एरियर बकाया है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, मैडम को पता है, प्रेरणा सिंह जी को और शोभा जी को, क्योंकि काउंसलर है दोनों। हमारे कर्मचारी जो अभी रेगुलर हुए 2003 और 2004 में, उनको 10-10 लाख रुपए एरियर बनाया उनका, वो अभी तक एमसीडी ने रिलीज नहीं किया। ऐसा मैडम क्यों आपके हाउस में क्यों नहीं पास हो पाता? मैं शोभा जी से और प्रेरणा जी से पूछना चाहता हूँ। प्रेरणा सिंह? देखिए, हम लोग एक जिम्मेदार ऑपोजिशन है और किसी भी हद तक राजनीति से ऊपर उठकर ये चाहते हैं कि कोई भी एक्शन लिया जाए, कुछ भी किया जाए, मगर सफाई कर्मचारियों का जो रुका हुआ पैसा है और जो उनकी तनख्वाह है वो उन्हें समय पर मिलनी चाहिए। और बीजेपी से भी हम यही आग्रह करते हैं कि आप ब्लेम गेम बंद करिए। केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। हम लोग मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो सफाई कर्मचारी है, जो दिल्ली की बैकबोन है, जो दिल्ली की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको समय पर उसका पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मेहनत का पैसा है। लास्ट रिस्पांस विद शोभा विजेंद्र। शोभा विजेंद्र, आप 30 सेकंड्स। हम राजू जी किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? फायदा नहीं चाहिए, हमें फायदा चाहिए सफाई कर्मचारियों का। राहुल जी भी यही चाहते हैं। तो सारा कांग्रेस के राज में है। खोली जी 1 मिनट। शोभा विजेंद्र जी, सारा कांग्रेस के राज में हुआ सब ये। हम सफाई कर्म शोभा जी आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हर चीज, हर एरियर और हर सैलरी आपको समय पे मिलनी चाहिए, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि 4th फाइनेंस कमीशन असेंबली के अंदर जाएगा, उसके अंदर टेबल होगा, टेबल होने के बाद इंप्लीमेंट होगा। अगर वो इंप्लीमेंट नहीं होता और अगर हमें एलजी के पास जाना पड़ता है, तो मैं सारे फोर्थ पे कमीशन तो मैम अभी अब आया है, क्यों आती है? मैं 2006 क्यों 2006 पे कमीशन की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, छठे वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ मैडम। मैं सॉल्यूशंस की जो गार्बेज 2004 में पक्के हुए हमारे कर्मचारी, जो गार्बेज, देखिए 4th फाइनेंस कमीशन, ये अभी की बात है। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 5 बजे उठकर सड़क पर आते हैं। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी मेहनत ही तो नहीं करते। अगर मेहनत करते तो तुम आप एरियर भी देते, सैलरी भी देते। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उस नजर से नहीं मैडम शोभा जी, अगर उस नजर से आप देखें, लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा ये है, मेरा आपसे सिर्फ थोड़ा सा ये कहना है कि आप एक बार सीएम के पास भी तो जाइए ना। अगर वो नहीं करते, अगर वो ये कहते हैं कि ठीक है हम आपके सफाई कर्मचारियों की कोई मदद नहीं करेंगे,
तो हम डेफिनेटली हम गए हैं। तो सीएम साहब से क्या आपकी रिस्पॉन्स हुई थी राजू जी? मैडम सुनिए, मैं बताता हूँ। मैम सुनिए, मैडम मैं कुछ बताना चाहता हूँ। शोभा 1 सेकंड, राजू जी बताइए सीएम के ऑफिस से आपका क्या रिस्पॉन्स मिला? मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ। शोभा जी सुनिए, अभी 26 दिसंबर को हम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन माननीय संतलाल चावरी जी के थ्रू हम माननीय सीएम साहब से मिले और हमने वहाँ पॉइंट रखे। पहला, कैशलेस कार्ड। हमारा कर्मचारी गंदगी में काम करता है और उसको अभी तक कैशलेस कार्ड नहीं दिया गया। ये वादा कांग्रेस का भी था, बीजेपी का भी था और आम आदमी पार्टी का भी है। दूसरा बात, हमारा जो एरियर है 6 पे कमीशन का, 7 पे कमीशन का। तीसरी बात, हमारे कर्मचारी 2 कैटेगरी में पक्के किए गए हैं, 2003 के अंदर और 2004 के अंदर। इन तीनों प्रॉब्लम को हमने सीएम साहब को बताया। सीएम साहब ने एक बात हमें कही है कि दिल्ली के तीनों कमिश्नर अगर मुझे पूरा बजट बता दें कि भाई परमानेंट करने में और इनका एरियर देने में ये बजट बनता है। अगर मेरी सरकार सक्षम होगी देने में, तो मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले बात सुनिए। शोभा जी लेट हिम टॉक। तो वो कभी नहीं होंगी। शोभा जी 1 सेकंड, गो अहेड। मैडम बात सुनिए, मैडम बात तो सुनिए। उन्होंने कहा अगर ये बजट आ जाता है मेरे पास और मेरी सरकार सक्षम होगी देने में तो पूरा बजट दूंगा, नहीं तो उसका 50% मैं दूंगा, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगूंगा मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कॉपरेट करे, अगर बजट रिलीज कर सकती है वो उनको सहायता के रूप में। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता के लिए भी बजट रिलीज कर सकती है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं करा पाते? Professor Shinoy Devi Goenka, Prerna Singh, Shobha Vijayendra and Raju Kohli for being part of this conversation. निगम पार्षद अगर चले जाएं, This sort of political passing the buck is obviously something we've gotten used to as far as Delhi is concerned. It comes up in every one of our conversations about Delhi. But the truth is that right now we don't have the time. When there's garbage piling up on the streets, the LG needs to instruct the state government, if they haven't already, to release the money as soon as possible. And if the LG is not going to do it, then the central government needs to step in and send those instructions right away. The LG still has the power to instruct the state government to release the money and instruct the MCDs to pay that money to the Safai Karmacharis who have not been paid. In the meantime, unfortunately, Delhi is piling up with garbage. Thanks for watching. You can watch live TV on our website mpnow.in. Find us on Facebook at facebook.com/magicbricksnow. And don't forget to click the like button. You can also follow us on Twitter at magicbricksnow. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/magicbricksnow.